बेटे ने मुझे कोपेनहेगन एयरपोर्ट ड्रॉप करा। हमने इकट्ठे बैठ के कैफ़े में कॉफ़ी पी और अब मैं अपने डेनमार्क के सफ़र को बाय बाय बोल रहा हूँ। ये 2 दिन मेरे लिए बहुत अच्छे रहे। पुराने दोस्तों से मिले, अपने स्टूडेंट से मिला, उनकी लाइफ़ के बारे में जाना, उनकी फैमिलीज़ में क्या हो रहा है, कैसे उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, क्या-क्या चीज़ें उनको लगा कि कि उनके लिए अच्छी हुई इस कंट्री के अंदर। ये सब जान के ना बहुत सैटिस्फैक्शन मिलता है कि जब आप किसी को करियर में गाइड करते हो और वो सक्सेसफुल होते हैं, तो वो सिर्फ उनकी ही विन नहीं है, वो उन हर इंसान की विन है जिसने उसकी जर्नी में कंट्रीब्यूट किया था। चाहे वो उसके कंसल्टेंट्स हों या उसके पेरेंट्स हों या उसके बहन-भाई हों, आई थिंक इट मीन्स अ लॉट। सो डेनमार्क के सफ़र को यहीं बाय-बाय बोलेंगे। इन 2 दिनों में बहुत कुछ मेमोरीज़ को ताज़ा किया हमने और अब हमारा अगला डेस्टिनेशन है बर्लिन। तो चलें, बर्लिन में मिलते हैं आपके साथ और देखते हैं बर्लिन एयरपोर्ट की जर्नी हमारी कैसी रहेगी। कोपेनहेगन एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा कर दिया इन्होंने पहले से। मतलब पहले जब मैं ट्रैवल करता था यहाँ पे तो ये एयरपोर्ट इतना बड़ा नहीं था, पर अब यहाँ इतने गेट्स हैं और इतना बड़ा कर दिया है कि आई एम क्वाइट अमेज्ड। पर जैसे कि वर्ल्ड में एयरपोर्ट सारे एक्सपैंड हो रहे हैं, आई बिलीव ये भी एक्सपैंड काफ़ी अच्छे से हुआ है। हाँ जी, शाम के बज गए हैं 6 और हम पहुंच गए हैं बर्लिन। सो अगले 2 दिन बर्लिन के अंदर रहेंगे और मैं बच्चों से मिलूंगा, स्टूडेंट से मिलूंगा और हम डिस्कस करेंगे उनके भी फीडबैक जर्मनी को लेके। सो बर्लिन जो है ये हमारा 3rd स्टॉप होगा। एम्स्टर्डम के बाद कोपेनहेगन, कोपेनहेगन के बाद बर्लिन, बर्लिन के बाद लात्विया में रीगा और फिर विल्नियस होते हुए हम दिल्ली वापस चलेंगे। सो मिलते हैं कुछ और स्टूडेंट से और जानते हैं उनकी स्टोरीज जर्मनी में। मैं 31 और 1 तारीख को जर्मनी में बर्लिन में मैंने स्पेंड किया। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी से मेरी मीटिंग हुई जर्मनी के अंदर और बहुत डिस्कशन हुआ इंडिया को लेके। काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट्स पे बात हुई, नए प्रोग्राम से बात हुई, APS पे बात हुई, AS टेस्ट पे बात हुई। इन सब को लेके मैं बहुत जल्द आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगा जो कि बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगा आपके लिए। और क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी क्लियर नहीं हैं, जिनको हम क्लियर करेंगे थ्रू वीडियो इंफॉर्मेशन। लेकिन आज ये 2 दिनों में जो मैंने प्लान किया था कि मैं स्टूडेंट से मिलूंगा और ब्लॉग बनाऊंगा, वो पॉसिबल नहीं हो पाया मेरे लिए क्योंकि कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा बिजी था यूनिवर्सिटी से मीटिंग करने में। लेकिन इंडिया जाने से पहले मुझे लगा कि कि एक ब्लॉग तो ज़रूर इम्पोर्टेंट है बच्चों के साथ। तो मैं जा रहा हूँ यूरो एशिया इंस्टीट्यूट। यूरो एशिया इंस्टीट्यूट जो है वो पाथवे प्रोग्राम प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, जिसमें वो लैंग्वेज कोर्स में आपको एडमिशन देते हैं प्लस फ्री एजुकेशन इन बैचलर्स और फ्री एजुकेशन इन मास्टर्स, राइट। इस स्कूल के साथ हमारी एसोसिएशन बहुत साल पुरानी है। हमने यहाँ बहुत स्टूडेंट भेजे हैं पढ़ने के लिए और इस स्कूल के साथ हमने एक और नया प्रोडक्ट शुरू करा है जिसको हम कह रहे हैं वर्क इन जर्मनी। सो बेसिकली चलते हैं यूरो एशिया स्कूल और मिलते हैं स्टूडेंट्स से और टीचर्स से और वहाँ के इंटरनेशनल ऑफिस से और जानते हैं कि अब आने वाले टाइम में नेक्स्ट ईयर के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए जर्मनी में जो जर्मन लैंग्वेज के साथ आना चाहते हैं पढ़ने के लिए। जर्मनी के अंदर एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती मुझे, हर चीज़ ऑन टाइम, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेरी वेल प्लान्ड। आई थिंक ये रीज़न है कि जर्मन्स अपनी टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हैं क्योंकि वो टाइम मैनेजमेंट को बहुत प्रायोरिटी देते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप जर्मनी आ रहे हो और अगर आपका प्लान है कि आपको आके यहाँ पे टेक्नोलॉजी बेस्ड कुछ काम करना है, कोई जॉब करनी है या आपने यहाँ पे आके कोई अपनी कंपनी खोलनी है या स्टार्टअप कल्चर है, तो आईटी से रिलेटेड अगर काम है आपका
तो आप बर्लिन ही आएँ, ठीक है? चाहे आप कोई भी प्रोग्राम पढ़ के आओ या किसी प्रोग्राम पे आओ, लेकिन अगर आपका प्लान जो है वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स या बायो मेडिसिन से लेके है, तो भी आप बर्लिन ही आएँ, क्योंकि बर्लिन जो है वो सेंटर बन चुका है बायो इन्फॉर्मेटिक्स और आईटी का। बिल्कुल ठीक सुना आपने। ये दोनों चीज़ें जो हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स यहाँ पे हैं और आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी यहाँ पे काम करने के लिए। मैं एक स्टोर में आया हूँ। ये एक टेक्नोलॉजी स्टोर है। यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मिलते हैं। पूरे जर्मनी के अंदर इनके स्टोर्स होते हैं। जैसे हमारे अलायंस स्मार्ट है, इस तरह से ये एक कंपनी है जिसका नाम है सैटर्न, राइट? तो अगर आप जर्मनी आ रहे हो और आप को टेक्नोलॉजी खरीदनी है, कुछ जैसे कि फ़ोन लेना है आपको या आपको कोई कंप्यूटर लेना है, राइट? तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप वो यहाँ से लें, सैटर्न से लें। उसके 2-3 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा कि क्योंकि आपने जर्मनी में रहना है तो आपको जो वारंटी है उसकी दिक्कत नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, जो वैरायटी है और जो मॉडल्स हमें यहाँ मिलते हैं जर्मनी के अंदर, वो काफ़ी मॉडल्स, काफ़ी ऑप्शंस आपको इंडिया में नहीं मिलती है। सो एक आपको चूज़ करने के लिए काफ़ी ऑप्शंस मिल जाती हैं। अब ये आप देखिए, मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मैं सिर्फ़ अभी टेलीविज़न सेक्शन में हूँ, ठीक है? और आप देखिएगा कि कितने टेलीविज़न की ऑप्शंस ये आपको दे रहे हैं। आई एम बिलीव कि इतने टेलीविज़न की ऑप्शन कोई भी आपको इंडिया में स्टोर में नहीं मिलती है फिज़िकली। शुरू करते हैं। ये देखिए, ये हम यहाँ से शुरू होते हैं, ठीक है? ये आप देख रहे हैं, ये ऊपर तक ये सारे, ये आपकी ऑप्शंस हैं, ठीक है? ये आपकी ऑप्शंस हैं। आपको जिस ब्रांड का, ठीक है, टॉप से टॉप ब्रांड जो हैं वर्ल्ड में, उनके मॉडल्स जो हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे, जो मैं इंडिया में मुझे देखने को भी नहीं मिलते। बेसिकली वो लॉन्च ही नहीं होते वहाँ पे, राइट? ये एलजी का देखिए सुपर थिन मॉडल ओलेड। आई एम श्योर वहाँ पे भी हैं काफ़ी सारे मॉडल्स, लेकिन अमेजिंग वैरायटी है, राइट? ये देखिए, टीवी है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है जी पूरे फ्लोर पे, कुछ भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है डबल हो रखे हैं, सारे डिफरेंट मॉडल्स हैं डिफरेंट कंपनीज के, राइट? ये देखिए, वो वहाँ से देखिए पूरा, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, सब जगह टीवी है ना? ये एक बड़ा बड़े अलग से किस्म का टीवी है। आई थिंक ये स्टैंडिंग में है, ज़्यादा महंगा भी नहीं लग रहा मुझे, लगभग 1000 यूरो का लग रहा है मुझे, ठीक है? ये तो बेसिक, अगर मेरा जो पर्पस था आपको ये फ्लोर दिखाने का, वो सिर्फ ये था। मैं यहाँ टीवी खरीदने नहीं आया हूँ। मुझे तो यहाँ पे एक माइक्रोफोन चाहिए था रोड कंपनी का, तो मुझे वो मिल नहीं रहा था। मुझे यहाँ से क्यों चाहिए वो भी बताता हूँ मैं आपको। क्योंकि जब मैं यहाँ से वो माइक्रोफोन बाय करूँगा तो मैं जब उसको इंडिया लेके जाऊँगा तो मैं एयरपोर्ट से वीएटी रिफंड ले लूँगा। लगभग 12 से 18% का मुझे वो वीएटी रिफंड मिल जाएगा, जो कि आपको मिलता है जब आप यूरोप में शेंगन में शॉपिंग करते हो और उनसे अपना वैट रिफंड लेते हो। तो जब भी आप कभी शॉपिंग करोगे तो आपको भी पता चलेगा ये बात कि आप ये ले सकते हो। तो इसलिए मैं यहाँ पे वो लेने आया हूँ। एंड तो मेरा मतलब ऑब्जेक्टिव यही है आपको ये शेयर करने का कि अब ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपके सेक्शन, ये आपका कैमरा सेक्शन है, सो सिर्फ कैमराज ही कैमराज है पूरी जगह पे। इसलिए आपको चाहिए कि अपनी टेक्नोलॉजी यहाँ से बाय करें, ताकि आपके लिए अपनी वारंटी क्लेम करना आसान हो और वैरायटी भी मिल जाएगी आपको। यूरोएशिया के जाने के रास्ते में एकदम से मेरी नज़र पड़ती है इन स्कूटरों के ऊपर। ये देखिए, ये वो बैटरी के स्कूटर्स हैं जो हमने अपने हेलसिंकी के व्लॉग में भी दिखाए थे पहले, जो लोग यहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इनको यूज़ करते हैं। और इन स्कूटर्स की बेनिफिट ये है कि आप इसमें पे एज यू गो पे करते हो, जहाँ जाना है वहाँ जाके आप इसको छोड़ सकते हो बैठ के। तो अगर मैं इसको यहाँ से बोर्ड करता हूँ तो मैं इसके अंदर क्या करूँगा, इसकी एक ऐप है, इसे स्कैन करूँगा, स्कैन करके मैं पे करूँगा, मीटर ऑन हो जाएगा और मैं इसको लेके आराम से यहाँ से पॉइंट बी तक जा सकता हूँ। और इसको मैं वहाँ छोड़ दूँगा और लॉग ऑफ ज़रूर कर दूँगा, क्योंकि लॉग ऑफ नहीं करूँगा तो मेरा जो मीटर है चलता रहेगा और मुझे बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाएगा। तो काफ़ी लोग मुझे ये कंप्लेन कर रहे थे जो मुझे मिले यहाँ पे कि मेरा काफ़ी बिल आ गया इसके ऊपर।
स्कूटर बड़ा एक्सपेंसिव है, वो एक्सपेंसिव नहीं है, आपने उसको लॉग इन और लॉग ऑफ दोनों करना है, नहीं तो मीटर एक्टिवेटेड रहेगा। Hello students, so as promised, I am now in Euro-Asia Institute and joining me Ms. Ksenia from International Office. Ksenia, thank you so much for joining me for this session. Thank you so much for being here. Hi students, hi from Berlin from Eurasia Institute. So basically, just to give us a bit introduction about Euro-Asia Institute, please tell our viewers what is Euro-Asia Institute and what exactly do you provide? Okay, Eurasia Institute is 30 years old next year, so we have huge experience in helping international students from all over the world start their education, career, and basically their life in Germany. So if you're interested in any academic or study and work program, this is the right place to start your career in Germany. So basically, when we talk about coming to Germany, a lot of people have dual, impression about Germany. Some says that you have to learn everything in German language, or some says you can study in English language. So let's divide into two parts. Of course, there is a bachelor's and master degrees in Germany, which are given in English language by private universities and public universities. But there's a much bigger market for bachelor studies and master studies provided in German taught programs in German universities. How you see them as different? Well, as you rightly said, there are two opportunities for students always to study in German and in English. However, it's obvious that the range of programs is much wider in German language, which is understandable since Germany needs employers for any industry who will be able to interact with each other and also work in German language. So, of course, out of almost 18,000 programs that are offered on undergraduate and postgraduate levels, the majority of them, which is over 90%, are taught in German, which also makes it easier for students to get a part-time job if they want to work along their studies, which they can. And it's also a huge benefit for students in Germany, as well as it gives them a huge benefit when they start looking for a full-time job after their graduation, when they get the stay back of 18 months. So during this time, they're already able to start working and they don't have to worry about passing the interview because they already have the necessary German language skills. Great. So basically, in a nutshell, what we are discussing is that either you come to Germany on English taught program, but you still have to learn German language. And honestly speaking, since 2004 till 2010, I was not a big fan of German taught programs. But in 2011, when I started tracking my students, who have sent to Germany, I got to know they're struggling because when they finished their degrees, they didn't have German language, and then getting a job for them in the mainstream was a difficult. This is where, when we did more research and we went to Eurasia Institute in 2010 and we started recruiting students for German taught programs. And since then, I think I have changed my perspective that, if you are coming to Germany, you have to learn German language. Now, if you're learning German language, then why to pay tuition fee as well? You can study for free, of course. Exactly. So it's a dual benefit because when you have learned the German language, you will be able to get a part-time job easier. You will be able to communicate with the local students. You will have a better networking. You will also get a free education. And most important, employers will hire you more quickly as compared to English speaking people. So there is actually, you're right, absolutely right in what you're saying. And another huge benefit for those who opt for the English taught programs is the admission requirements. Okay. Given that English taught programs, especially in public universities, are very scarce, the admission requirements are very, very tough. True. So it not only gives you less opportunities to study in English because there are in general less programs, but also the requirements are very high. So you need to have much better grades in your high school or in your bachelor's degree already to even get admission. Whereas there are much more options to study in a German taught program, and you are much likely to get easier an admission to a German university in a German taught program, which is also gives you more options and less headache. So basically, students, I will be giving a quick, small introduction about the program, how the program is designed. You are a class 12 student. You come for a German language program, correct? And then how much time he has to spend more to do his bachelor's degree? Well, the students after +2 from Indian curriculum, let's say, you need to spend 1 year in a prep course,
where you will be preparing for your stream, whether it's technical or medical or business. And then the regular bachelor's degree is normally 3 years or 6 semesters. So basically, 13th year, which you call it student collegium. Correct. That's the 13th year plus you have 3 years of bachelor's again. So total 4 years bachelor students should be prepared for. Exactly, which is probably almost as 4 years in India for the bachelor's degree, like BTech, which doesn't mean you like waste any time. Absolutely, makes sense. Next thing, student who have 10 plus 3. I'm repeating again, student who have 10th plus 3 years diploma, polytechnic diploma. You were always asking for, can I go to Germany? Yes, now you can go to Germany because there is a program, there's a pathway program specifically designed for you where you can go and study your engineering. So you have to have 10 plus 3 from India. You come for a 1 year pathway program. Then you have 3 years of bachelor's again. Right. Where by pathway program we mean a special Studienkolleg or a foundation program, which already is at the university. So you receive a full status of a student, you enjoy your life on campus, and also get prepared for your full-time bachelor's degree later on in engineering or in the business field. Students, please note that if you're coming for German thought program, you do not require IELTS, you require a German language proficiency test, which is a certification, which is given by EuroAsia itself. But if you are, you also have to do AS test. There might be a possibility that every student have to do a AS test as well to come to Germany for a bachelor degree program. This is what we have heard. This is a news. Students, one thing I want to add that when you are coming to Germany, please note that these German language requirement is one thing, but you have to give the AS test also for bachelor students, right? And this is the mandatory document. You do not have to give the IELTS if you are coming for German taught program because you will be getting a German B2 level certification from India itself before you come to Germany if you go for a EuroAsia pathway program. So students, please note that if you want to come for an academic pathway program, then you will do your A1 level in India and the rest of your A2, B1, B2 up to C1 level, right? In Germany with Eurasia, and then you start your bachelor degree via student collegium. This is the pathway program for all the students who are coming from Gloucester, and plus you have to pass the AS test as per the German government requirement. The only difference is that you do not have to give the IELTS because now you're coming for a German taught program, right? For the English taught program, IELTS is mandatory, 5.5 to 6 months, but for German taught program, it is not mandatory. That was for bachelor students. A bit more complicated because of the AS test, and we will keep making more videos for you so you get more information in coming days. Coming to the master students, you have a 3 years bachelor's degree, right? And you want to come to Germany and you want to have a full-time job as soon as you finish your master's. It's very, very important that you understand that German taught program is precisely the best choice for you because when you finish your master's degree, which will be 1 year or 1.5 years, it is very short time and you have to jump into the job market. Employers are looking for those employees majorly who can speak German language. So I think bachelor students still get a lot of time, to practice their German language. They have 3 to 3.5 years, but master students have very small time. So coming to Germany for an English taught program, of course you can come and we have multiple options for you. But in the German taught program, the best thing is that you get an access to the job market instantly. So I'm a 3-year bachelor degree student from India, let's say BCom or a BSc IT or BA. What do you have for me? We have plenty of options in plenty of public universities, technical universities, University of Applied Sciences, where you can focus on research, where you can focus on practical skills. Most importantly, you will be getting skills which the companies need because all the universities work closely with the organizations and all the industries, so they know exactly what skills the students need and you get prepared accordingly. This also allows you to settle in a job very close to your graduation, and most students even get a full-time job offer while they're still students because companies are very interested in getting good qualified graduates for their jobs. Now, the key to this amazing career is to learn German language, which again, you will spend part of the program in India, you will learn language on the basic level, then you can come here to Berlin, you've complete your pathway program, and then off you go to your master's degree to a free, of course, tuition-free public university program. Great.
So when I finish my master's degree in Germany, it will be 1.5 year or 2 years program. Well, it's between 1 and 2 years, basically. Okay. The main difference is that in the 2 year program, you're most likely to get a little bit more of practical experience via internship. And in 1.5 years, you will have maybe a little bit more of research option, but both options are possible. And they are in mostly public universities. Yeah. Right. Of course. So once I finish my program in Germany, the German taught program, a master German taught program, I will be eligible for 1.5 year job seeker visa. Correct. While studying my master degree, can I work part time? Correct. What is an average pay rate for students when they work in any normal student jobs? Average. It's really a little bit hard to say, but the minimum is normally about 500 euros per month, which is more than the half of what the students actually spend on their living. If you had already as a master student some previous experience, of course you are highly eligible to get even higher salary even while you're a student. And of course it will unfortunately depend on the region and on the industry. But most of the master students, like the bachelor students, get the part-time jobs already related to the field. So you won't be doing like kitchen jobs or any other jobs. You will most likely be working already in your field, getting experience and getting paid for that. A lot of people who are in IT or engineering students who want to come to Germany for masters, do you think that they, once they have their bachelor degrees or they have taken the German language, it is easier for them to go to the companies right when they start their masters, or they have to wait when they finish the masters? They can definitely already start approaching the companies for the jobs. The great thing also about German universities is they facilitate students in getting those jobs or paid internships. There's of course a special career center in every university where companies come and they introduce themselves and they inform the universities about their jobs. And in general, in the cities, there are also fairs special for students or tech fairs. So of course, the earlier you start, the better and the more chances you have to settle better in a better job the earliest. Great. So student has to have a blogged account as well for bachelor's and master's both, right? So students, this was the session for those who are looking to study in Germany, a German taught program, free education without any tuition fee. You can come to Germany and finish your bachelor's and master's. We have two pathways. For more information, you can call me on the below mentioned number and we'll be happy to help you with all the details. And we can also set up a private session with the Eurasia team as well. If you would like to have a separate questions, you have more detailed questions, your parents might have detailed questions, please don't hesitate to contact us. We'll be happy to set up your meeting with the Eurasia one-to-one. Thank you so much and keep watching Indo YouTube channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.